back to my channel. So in this video these are the topics which we will cover. So let's start. Consumer equilibrium. So we already know who is consumer. A consumer is someone who consumes goods and services for the satisfaction of his wants both as an individual and as a household. The main objective of consumer is to get maximum satisfaction by spending his income on various goods and services. Now what is equilibrium? Equilibrium means state of rest or position of no change. So when we combine these two terms, so it becomes that, so the definition which come out is, it is a situation or the position where consumer is spending or he is getting maximum satisfaction and he don't want to change his level of consumption. It means that अपनी income को spend करके on the various goods and services he is getting maximum satisfaction and he don't want to change that level of consumption. Now we will read this. So consumer equilibrium in case of single commodity. Okay, it means the consumer is consuming only one commodity. So there are some underlying assumptions for that, and the assumptions is as it is we read in law of DMU. So we are not wasting, so without wasting time, let's proceed. Equilibrium condition. अब हमको ये पता है that equilibrium is a state of rest or position of no change, वो position where consumer don't want to change his level of consumption. But what are its conditions? So there are two conditions. The first is mu is equal to P and the second is mu falls as consumption increases. Mu is equal to P. I think in our previous video I do told you that we are changing the utility in monetary terms. You know that we change the utility in monetary terms. Okay, and in that I told you that we are changing the utility in monetary terms so that it allows easy comparison between the utility consumed, means the marginal utility, and the price paid by consumer, which is P. So that is the reason why we change utility in monetary terms, because वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एंड अगर वो हमको हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो दोनों एटलीस्ट mu एंड जो P है वो दोनों की जो यूनिट्स हैं वो रुपीज़ टर्म्स में होनी चाहिए ना, सो दैट इट अलाउज ईजी कंपैरिजंस. अगर एक यूटिल में होगा एंड एक रुपीज़ में होगा तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस कि हम उन दोनों को कंपेयर करें. We are very familiar with this, that mu falls as consumption increases. We know that why this mu falls, because of law of DMU. DMU operate करता है law of DMU is the reason behind why this mu falls. Now there are two conditions when the consumer is not at equilibrium. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब mu इक्वल टू P होगा, एंड mu तो फॉल ही करता है थ्रू आउट. हमने देखा था व्हेन वी read the utility, हमने उसमें देखा था, and when we read the relationship between TU and mu, तो हमने but we see that mu falls as consumption increase. And why mu falls? Because of law of operation of DMU, because law of DMU operate होता है. Okay, and there are two conditions when the consumer is not at equilibrium, which is mu, when mu is greater than price and when mu is less than price. So let's read this in detail. So in this table there is a units of x, there is a price of x mu. This mu is in utils. Okay, this mu is in utils and mu x in rupees terms means हमने इसको convert कर दिया है. So you are seeing that there is a no difference between these two. इन दोनों में कोई difference नहीं है. Why? Because MUM is one util. It means that by spending an extra rupee, the extra satisfaction which consumer receive is also one. This difference MUX minus PX, तो ये जो difference होता है that is ये जो MU हम यहाँ पे देखते हैं that is in rupees terms, जो monetary terms में change होता है वो वाला. PX is your price of X. So we are seeing the difference. Why we seeing the difference? Because कंज्यूमर कंपेयर करता है mu एंड P को. तो लेट इज mu इज इक्वल टू P. ओके, व्हेन mu इज इक्वल टू P एंड हम उसको इस अपने लेफ्ट राइट हैंड साइड लेकर आते हैं दैट mu माइनस P विच इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कंज्यूमर इन दोनों का डिफरेंस देख रहा है, सो दैट ही गेट टू नो दैट एक्चुअली में उसको गेन कितना हो रहा है. ओके, तो
देखो इनिशियली ही इज गेनिंग 15 सी दिस इज ऑल इन रुपीज टर्म्स नाउ, तो आप यूटिल्स मत यूज़ करना। यहाँ पे कंज्यूमर को 15 देख रहे हो, 15 यूनिट्स आप कह सकते हो, या फिर उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 10 का प्रॉफिट है, देयर इज 5 प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट है, दिस इज देयर इज अ प्रॉफिट हेयर। when it is 0 it means that mu is equal to px. You can see that this is 10 and this is also 10, प्राइस भी 10 है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस इसीलिए 0 है। when mu x is यहाँ पे mu x क्या है, it is less than price of x. You can see it is less than price of x. So this is basically what I am saying. So initially what happens is consumer is getting the profit, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन जो डिराइव हो रही है उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। आप देखो 15, 10, 5, कंज्यूमर इज एट प्रॉफिट। व्हेन कंज्यूमर इज एट, जब नेट गेन 0 हो जाता है, at that time consumer is at equilibrium. It means when he is consuming 4th unit he is at equilibrium, and that is the point when he don't want to change his level of consumption. But अगर इसके बाद भी if he is consuming more good, if he is consuming more good after that, after the equilibrium condition, so it will result in loss. तो उसको loss हो रहा है, you can easily see here. So this is the another example, and in this example px is 2 and mu is as it is, and mux in rupees. See this firstly. MUM is 5 utils, which means that by spending an extra rupee, extra satisfaction is 5 utils. So 5 utils is equal to rupees 1, because यही तो बता रहा है. So 1 util is equal to rupees 1 upon 5. So 25 utils को जब हम मनी टर्म्स में चेंज करेंगे तो it is 25 upon 5 divided by 5. So सेम ये टेबल ऐसे ही फॉलो होगी. So let's see हमें क्या रिजल्ट मिला. This is the result which we get. Now in this mu now we are seeing the difference between mux and px. तो हम उसका net gain देख रहे हैं. So initially it is 3, 2, 1. It means consumer is gaining here. There is 0. It means at this point consumer is at equilibrium, and in this there is a loss, like this particular portion where there is a negativeness. There is, when these units are negative, it means there is a loss. There is a profit as mu is greater than p, and here mu is equal to price. See, now I am telling you in details actually what happens when mu is equal to p. Consumer is at its equilibrium because he is purchasing or buying such quantity of commodity which gives him maximum satisfaction. Maximum satisfaction की condition थी that mu is equal to price. When mux is greater than price means this, ये जो first है, जब उसको profit मिल रहा है, when the consumer is getting the profit, उसमें क्या हो रहा है, benefit ज़्यादा है. Profit is greater than cost. Profit मतलब mu यहाँ पे ज़्यादा है then cost. Cost is price. mu is greater than the price. आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा that in this it is also written that mux is greater than price. It means that जब consumer को किसी चीज़ से ज़्यादा satisfaction मिल रहा है तो he will buy that commodity, and जब वो उस commodity को ज़्यादा खरीदेगा mu fall हो जाएगा उसका, जो उसको marginal utility derive होगी when he is consuming more commodity, तो mu fall हो जाएगा and as a result mu equal to p हो जाएगा. अब सी दोबारा से देखते हैं. ओके, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट, तो उसने कंपेयर किया mu एंड प्राइस, उसको 3 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, उसको 3 ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो रहा है. सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिल रहा है, आप ये कह सकते हो. सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा डराइव हो रहा है. अब उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा डराइव हो रहा है तो वो क्या करेगा, मोर यूनिट्स खरीदेगा, उसी कॉमोडिटी को वो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि अभी वो प्रॉफिट में है. ऐसा आप भी करते हो, जब आपको लगता है कि यू आर एट प्रॉफिट तो आप ज़्यादा चीज़ खरीदते हो. ओके, बट फिर क्या होगा, व्हेन ही इज़ कंज्यूमिंग मोर ऑफ दैट कॉमोडिटी mu फॉल हो जाएगा उसका. जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको डराइव होगी उस चीज से जिसको वो खरीद रहा है, लेट्स से हियर इट इज गुड x, तो वो फॉल हो जाएगा. एंड व्हेन दिस mu falls,
एम इट बिकम्स इक्वल टू प्राइस. जब तक एम यू प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता तब तक वो खरीदेगा, एंड जब वो प्राइस के इक्वल आ जाएगा तो उसका नेट गेन ज़ीरो हो जाएगा. इट मीन्स उसको गेन अब नहीं हो रहा है, वो ज़ीरो पर है. उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर होगा. एंड एम यू फॉल क्यों करता है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू. अब नाउ सपोज कंज्यूमर उसके बाद भी परचेज कर लेता है, फोर्थ यूनिट के बाद, व्हेन ही इज एट इक्विलिब्रियम, बट आफ्टर दैट आल्सो ही इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ दैट गुड. तब क्या हो रहा है? एम यू जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा कमोडिटी, देन उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट लॉस टू हिम. उसको लॉस हो जाएगा उसमें. ओके, this is the figure which I made. So there is a y-axis, there is x-axis. On x-axis we have taken units of good x. On y-axis there is mu and price. See price, जो price है वो constant है. जितनी भी आपने units consume करी है, throughout the units you consume, px is constant. And we have to plot mux. So mux हमें कौन सा वाला plot करना है? Which is in rupees terms, because we are comparing mu and p. तो अगर हम वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इट शुड बी इन द सेम यूनिट्स. सो फर्स्ट यूनिट पे एम यू इज़ 5, सेकेंड 4, थ्री पे 3, फोर्थ पे 2, एंड फिफ्थ पे इट इज okay. So and when consumer is consuming 5, fifth unit mu is 1, sixth unit पे 0, and then it becomes -1. And where is our equilibrium? Where when mu is equal to px, वो है हमारा फोर्थ यूनिट पे. ओके, एंड तब हमारा px is 2 एंड हमारा जो mu है that is also 2. So in this mux is equal to the price of x, so that is the equilibrium. So consumer equilibrium पे वहाँ पर होगा. Point of maximum satisfaction or full satisfaction is when mu is 0, so which is at the sixth unit. Although हमको इसमें इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, because we are only reading the consumer equilibrium in case of a single commodity. I think now it is very enough clear to you. This is how you write in your exams when the question comes. So firstly you need to give a definition कि consumer equilibrium में कब होगा. Then you need to write the assumptions. Assumptions is as we did in law of DMU. The explanations you can copy from that. Equilibrium condition, you have to write the equilibrium condition is that when mu is equal to p and mu falls as consumption increases. Give the reasons and why mu falls. mu is equal to p का मतलब क्या है, this, and you just need to write a little bit of it here. Then आप एक example लो, उससे आप समझाओ. So we have taken the example here. So just firstly then mention करो that x axis पे what are you taking, y axis पे आप क्या ले रहे हैं, px क्या है, just अपने ग्राफ को बताओ. Then write that आपने ये जो mu है which is in utils terms you convert in rupees terms, and how you convert it, because आपका mu 5 utils था and उससे आपने ये करा, you just have to write that. Then this is the more explanation of this, and बहुत ही ज़्यादा detailed explanation मैंने दिया so that you can understand it better, and if you understand it better then you can write it in your language as well. So this is the हमने यहाँ तक सब पढ़ लिया है. This note, when mu is greater than price, consumer is getting profit, so he will continue his consumption. As a result his mu falls. हमने ये already we discussed it, and he will back at equilibrium position. You need to write this, he will back at equilibrium position. ये आपको लिखना होगा. Consumer will and then the second condition is that there is a arrow का इसमें there is a difference of arrow actually. यहाँ पे जो arrow है this is like this, ये arrow ऐसा आना चाहिए. Okay, so mux is when mux is less than price of x, so consumer will reduce his consumption. This will raise his mu and he will back at equilibrium. जब वो commodity को किसी commodity को कम से कम खाना consume करना कम कर देगा, क्या होगा, उसका
मार्जिनल यूटिलिटी उससे इंक्रीज हो जाएगी. कैसे होगी? यू कैन सी इन द टेबल एज वेल. व्हेन कंज्यूमर इज एक्चुअली कंज्यूमिंग लेस तो उसका एमयू ज़्यादा होता है. Now consumer equilibrium in case of two commodities. It means the consumer is consuming two commodities, because in real life consumer consumes more than one commodity. So that is the reason why we are reading this. And in this there is one important point, is that law of equimarginal utility. The law which applies is law of equimarginal utility, because law of DMU applies in case of a single commodity or one use of a commodity. One use means if I am taking a milk, तो मैं सिर्फ उसको कंजम्पशन पर्पस लाइक ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकती हूँ. अगर मैं उसको सिंगल कॉमोडिटी में शो कर रही हूँ मिल्क को, मैं ये नहीं कर सकती कि मैं उसका वी आर मेकिंग पनीर ऑफ इट. हम ऐसे उसको अदर उससे हम अगर कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके. So law of equimarginal utility is based on law of DMU and all assumptions are same. As सारी assumptions same है, but it has two goods. This is also called law of substitution, law of maximum satisfaction, and Newton's second law. Assumptions, as I already told you, all assumptions are same. Equilibrium conditions. So एक equilibrium condition तो same है, that is mu falls as consumption increase, and we know the reason that it falls because of law of DMU. The first condition is mux upon px is equal to muy upon py. According to law of equimarginal utility, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of mu of two commodities and their respective prices are equal. Okay. So mux upon px का मतलब क्या है? That is utility obtained from last rupee spent on good x. Because यहाँ पे mux upon px की बात हो रही है, so we'll take good x. muy upon py, utility obtained from last rupee spent on good y. Okay, so this is our equilibrium condition. So let's understand this with the help of example, with the help of a table. There is a units, price of x is 10, mux which is in utils, mux upon px. तो कैसे आया ये? Simple, mux upon px, that is 80 upon 10, 70 upon 10, 60 upon 10. Okay, and this is how the table follows. Muy is 70, 60, py is 5, which is constant. Then we find out muy upon py. So I don't think so there is no hard calculation that, so you can easily calculate. Mi is 55. Mi is money income. So when we read the case of single commodity, in that consumer spent his entire income on goods X, not on good X. Because why I am saying good X, because हम X एक्सिस पे गुड X लेते हैं वहाँ पे यूनिट्स ऑफ, तो मतलब वो जो भी गुड ले रहा है, बिकॉज हम वी डू नॉट, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी कॉमोडिटी, सो हम उसको गुड X ही बोलते हैं. Okay, so in this when we are consuming two commodities, when consumer is consuming two commodities, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है, ही स्पेंट हिज एंटायर इनकम ऑन दीज टू गुड्स. ओके, गुड एक्स एंड गुड वाई. बट इनिशियली वो सिर्फ एक गुड पर ही खर्च कर रहा था, विच इज़ गुड एक्स. बिकॉज जब हम किसी गुड को नहीं डिफाइन कर रहे तो वी आर टेकिंग इट गुड एक्स. The equilibrium condition is mux upon px is equal to muy upon py. Okay. So mux upon px is equal to muy upon py is the equilibrium condition. तो muc, now this mux upon px, तो यहाँ पे 8 आपको मिल रहा है फर्स्ट. तो आप देखो कि muy upon py का जो कॉलम है उसमें कहाँ पर है 8. तो वी फाइंड आउट दैट 8 इज हियर. हमने फाइंड आउट किया कि 8 यहाँ पर है. 7 इज नॉट देयर इन द muy upon py. 6, बट यस 6 इज देयर, इट इज देयर हियर एंड इट इज हियर. 5 एंड 4 भी नहीं है. तो मतलब कि हमको दो चीज़ें मिली हैं जो कि सेम है, दैट इज 8 एंड 6. अब हम देखते हैं कि इनमें से हमारा जो इक्विलिब्रियम जो हमारी जो पोजीशन होगी कंज्यूमर की, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो कौन सी होगी.
it means that when consume, but see, there is one important point here. कंज्यूमर को अपनी सारी इनकम स्पेंड करनी है ऑन द परचेज ऑफ दीज टू गुड्स, तो वो हम कैसे बताएंगे कि कंज्यूमर एक्चुअली में कर रहा है नहीं कर रहा? तो देयर इज एन इक्वेशन विच इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम आई, मतलब कि प्राइस ऑफ गुड एक्स और फिर वो उसकी जितनी क्वांटिटी ले रहा है उन दोनों को आप उनका मल्टीप्लिकेशन करो, देन उसको ऐड करो पी वाई एंड क्वांटिटी और जितनी वो वाई की ले रहा है उससे. So it should be equal to the MI. If it is equal, it means the consumer is at its equilibrium, and if it is not, it means he doesn't spend his entire income on these two commodities. Okay. So see, when consumer is consuming 1 unit of X and 4 unit of Y, 8 वाला देखो, MUX upon PX जब 8 है and MUY upon PY 8 है, तो जब वो 8 है कंज्यूमर की यूनिट, सी द यूनिट्स, unit is 1. Okay, unit is 1, and when consumer is consuming and see now see this 1, it means consumer is consuming here 4th unit. So when consumer is consuming 1 unit of X and 4 unit of Y, तब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है. हमने देखा लेकिन अपनी एंटायर इनकम तो वो स्पेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जब व्हेन वी कैलकुलेट तो ये जो कैलकुलेशन आई 30, मन इनकम 55 थी एंड विच इज नॉट इक्वल. सो सी द अनदर वन नाउ. व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 6 क्वांटिटी ऑफ एक्स, 6 यूनिट ऑफ एक्स, सी 6 यूनिट ऑफ एक्स, तब ये 3 है, सॉरी नॉट 6 यूनिट ऑफ एक्स. जब हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 6 है, कंज्यूमर इज एक्चुअली कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट ऑफ y. दिख रहा है ना 5 यूनिट ऑफ y. नाउ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इट बिकम्स इक्वल. इट मीन्स कंज्यूमर का जो पॉइंट है वेयर ही इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज 3x plus 5y. Okay, so now this is how you can write in your exams, and all the assumptions are same. Yes, you can also tell them about the law of equimarginal utility, so it gives you additional point. इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको बतानी है, दैट दिस इज आर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट MU फॉल्स, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तब ये एंड सी हियर that you just need to tell that consumer is not spending his entire income, so that is the reason why this 1 unit of X plus 4 unit of Y, consumer is not at equilibrium at that point, but he is at equilibrium when he is consuming 3 unit of X plus 5 unit of Y. Okay, now we know the equilibrium condition MU fall हमारा which is a very necessary condition, and second MU X upon PX is equal to MU Y upon PY. But there are 2 points, there are 2 conditions when the consumer is not at its equilibrium. First is when your MUX upon PX is greater than MUY upon PY. So इसका मतलब क्या है, that utility which consumer is receiving by spending an extra rupee or last rupee spent on good X, मतलब कि कंज्यूमर को गुड X से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ओके, तो वो क्या करेगा, एज अ रिजल्ट ही विल बाय मोर ऑफ एक्स, वो ज़्यादा एक्स को खरीदेगा. एंड व्हेन ही इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ एक्स, बिकॉज हिज इनकम इज लिमिटेड, तो उसको कम खरीदना पड़ेगा वाई का, अनदर गुड का उसको कम खरीदना पड़ेगा, which leads to fall in MU of Y, which leads to rise in MU of Y. See, when consumer is buying more units of one commodity, तो उसका MU fall होता है, and when he is not consuming or consuming less of other commodity, उसका MU rise होता है. होता कैसे है, we already know that because of operation of law of DMU. So consumer will be back at its equilibrium position. Then the second condition is when MUY upon PY gives the additional utility or gives more utility to the consumer than the good X. So as a result, consumer will buy more of Y. When he buys more of Y, it leads to fall in his marginal utility of Y, and as he is consuming less of X, because when consumer is consuming more of one commodity, he has to reduce the consumption of other commodity because of his limited income. Okay,
So he will buy less of x, and as he will buy less of x, it leads to rise in mu of x. Then consumer will be back at its equilibrium position. So I hope I am making sense. But if at any point you think that I am like, or you do not understand, or I am not making sense, then you can write it in comment box. And you can also mail me, and I definitely will answer. So that's it for today. Thank you.